Hi, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 8 of the chapter Amines. So, till now, in the previous lectures, we had discussed about the structure of amines, the classification of amines into the primary, secondary, and tertiary amines, then the nomenclature, both the rules and the examples also. Then we came on to the preparation of amines using the different class of organic compounds. Then we talked about the properties in detail. Among those properties, among the physical properties, I told you that the boiling point and the solubility in water, and among the chemical properties, basicity. These three properties, they are the most important ones from the examination point of view. Okay, so very frequently the questions are asked from these. So you must be aware of all the conceptual things. After that, we were discussing about the chemical reactions of amines. So we had discussed till now about the neutralization reaction, that is acid plus base will give salt. Then about the alkylation, then about the acylation, and the fourth one was the carbylamine reaction, in which the carbylamine or the isocyanide test is used for the test for the primary amines. Okay, so in this only primary amines they give this kind of test, and rest, the secondary and the tertiary amines, they do not react. So and the fifth one, we were discussing about the reaction with nitrous acid. So we will continue from the reaction with the nitrous acid. As nitric acid is HNO3, nitrous acid is HNO2. And I also told you this important thing over here, that this nitrous acid is a very unstable compound. Okay, so we just cannot prepare it and keep it in the laboratories for further reactions. तो जिस भी रिएक्शन में इसका यूज होता है, हम देन एंड देयर उसे प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्ट वहीं पे तुरंत प्रिपेयर करते हैं, एंड देन एंड देयर यूज इट इन द फर्दर रिएक्शन. So this kind of preparation method is known as in situ preparation. मतलब directly in the reaction mixture itself we are preparing the reagent. So I'll first write down the preparation of HNO2 just using this in situ preparation. So we will use sodium nitrite and HCl as the reagents for preparing HNO2. Okay. So in the reactions, I will suggest you to use this NaNO2 plus HCl as a sign of HNO2 itself. ठीक है, तो आप directly HNO2 की जगह ये दोनों compounds use करिए whenever you are writing the reactions with the nitrous acid. Also, another important point is कि because of the different properties of primary, secondary, and tertiary amines, the various reactions they will these different kinds of amines will react differently. They will give the different kinds of products with the different kinds of reagents. Okay, so these reactions can simply be used as a test. If primary amine is giving some product, then secondary amine is giving some another product. Okay, so whatever product is being formed, we can use that product to determine what kind of amine was the reactant. So in this also, I like to divide it into several parts because different kinds of amines will give the different products. So first, we will start with primary aliphatic amines. So primary aliphatic amines, they react with HNO2 to form the aliphatic diazonium salts. Okay, diazonium salts में there is a direct bond between the two nitrogen atoms. So these aliphatic diazonium salts are very unstable compounds. So that is why वो जैसे ही ये product बनता है, these literally decompose and they liberate nitrogen gas and alcohols. So that is why हमें कभी we do not get aliphatic diazonium salt as a final product. We are not able to see it. The reaction will be like this. Because we are doing for primary, so I'll write only a single general reaction which is using RNH2, or just let me write it in this form, NaNO2 plus HCl. This denotes the in situ preparation. Okay, Rn2Cl minus, and this decomposes into the alcohol, nitrogen gas, and HCl. So this is the diazonium salt, which is very unstable. Now we'll
do the similar reaction for the case of aromatic uh, aromatic primary amines. So the primary aromatic amines, they react with the nitrous acid. They also form the diazonium salts, जैसे कि aliphatic amines कर रहे थे. But the only important point here you should remember always कि this reaction always takes place at very low temperatures. Very low temperatures, I mean around 0 to 5 degrees Celsius are preferred. So what happens is at such low temperatures, around 0 to 5 degrees Celsius, the diazonium salts which are formed, they are stable. ठीक है, अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे या फिर the reaction is happening at room temperature, it will be unstable or similarly it can decompose into something else. So why are we doing it? Like why do we actually want to recover this diazonium salt product? Because the reason is they are considered a very important class of compounds. Because abhi, there is a separate section in this chapter itself which is related to the diazonium salts because they can be used for the preparation of the other aromatic compounds as well. ठीक है, तो industrial, when we talk about the industrial applications, so there are a lot of applications of the diazonium salt itself as a reagent. So that is why हम चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को रिकवर करें and for because of that we are using such low temperatures. So first I'll write down the reaction. Okay, I should mention about the low temperature thing. ये जो हमारा aliphatic diazonium salt है, this is unstable, ठीक है? And in the case of primary, important thing is low temperatures. Generally 0 to 5 degrees Celsius is preferred to recover the product. तो आप समझ रहे हो, you should know the difference कि हम low temperatures primary aliphatic amines में क्यों use नहीं कर रहे हैं. Because the aliphatic diazonium salts, they are not that useful. But the aromatic diazonium salts, they are very useful industrially. That is why we want to, recover them. Now I'll write on the general reaction. So I am taking the simplest compound, that is aniline. Then similarly in this reaction also, we will use in situ concept. And the temperature is 273 to 278 Kelvin. Okay, this is in Kelvin. So final product would be, this is the benzene diazonium chloride with the byproducts sodium chloride and water. Okay, so this is aniline, the reactant is aniline, and this product, because ये इसमें सिर्फ normal benzene ring लगा हुआ है, so we will simply call it as benzene diazonium chloride. ठीक है, so this was the reaction of HNO2 with the primary amines. ठीक है, aliphatic और aromatically अलग अलग. Now we will write down the reactions for the secondary and tertiary amines. So the third case in the same reaction category is using the secondary or the 2-degree amines. Now here aliphatic and aromatic both are same. Like both give the similar products. Okay. So the product here is, they are known as nitrosoamine. I'll write down the separate reactions for the aliphatic as well as the aromatic case. So for the aliphatic case, the general reaction will be R2NH and the product will be R2N, single bond N, double bond O. So this is the final product and this comes in the category of nitrosoamine. ठीक है, so इसका जो नाम होगा that will be, so the nomenclature is N nitroso dialkyl amine. ठीक है, ये जो नाइट्रोसो ग्रुप है इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, इसको हम नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम बता रहे हैं कि N जो कि हमारा अमीन वाला N है, NH2 वाला N है, इससे नाइट्रोसो डायरेक्टली अटैच्ड है. ठीक है, सो दिस ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड एंड वी आर हैविंग डाइअल्काइल अमीन. ठीक है, सो ये जो डाइअल्काइल है दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप. Now we'll do it similarly for the aromatic. So I'll write it in form of pH. Okay, the name of this compound is N-nitroso N-alkyl aniline. So this was for the secondary case. Now the last one comes the tertiary case or the 3-degree amine.
Okay, so the product in this category, the products are called. See the names they might seem very difficult, but when you look at the structure is not that complex as you might think just by looking at the name. So the products of this category they are known as N-nitroso ammonium compounds. So for the tertiary amine, this will be R3N. This reaction is also carried out at the 0 degree Celsius at the very low temperatures, and here two kinds of salts are formed. ठीक है, सॉल्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में यू आर हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जिसमें कि रिप्लेसमेंट हो सकता है, you know, any group can replace that hydrogen atom and form another compound. But in the case of tertiary, you are not having any, at least one hydrogen atom भी नहीं है आपके पास, तो replacement possible ही नहीं है. So that is why we are getting different kinds of salts in the case of tertiary compounds. And the structures of these salts will be of this kind. Okay, so basically, this compound, this is the main product, and this is known as a nitroso-ammonium chloride. ठीक है, this is N-nitroso-ammonium chloride, क्योंकि ये nitroso group लगा हुआ है. So this was all about the reaction with nitrous acid. Now the next reaction will be reaction with benzene sulfonyl chloride. Now benzene sulfonyl chloride is also known as Hinsberg reagent. ठीक है, ये उसका common name है. So I'll also write down the formula because यहाँ पे benzene है, तो C6H5 is the phenyl ring, and this sulfonyl chloride group is SO2Cl. जैसे thionyl chloride होता है तो SO2Cl2 होता है, यहाँ पे sulfonyl chloride है, so it is different from that compound. So this is simply SO2Cl, Hinsberg's reagent. ठीक है, so for this class of reaction also there will be different reactions with the different kinds of amines. ठीक है, तो इसको भी हम बाइफरकेट करके ही वील राइट डाउन द रिएक्शन. और जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं उसको जो उनका जो कॉमन नेम होता है दैट इज सल्फोनामाइड, जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होता है दैट्स सल्फोनामाइड. आई राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड देन आई आल्सो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे आई आल्सो राइट डाउन द IUPAC नेम. So first we'll do it for primary amine. So I'm directly writing down the reaction. So this is the benzene ring. This is SO2Cl. ऐसा. This is the structure of the Hinsberg reagent. Now, when you are taking a primary amine, suppose we take C2H5 and H2. Okay, so the reaction will take place and the product will be basically इस compound Hinsberg reagent का जो chlorine atom है that will be getting replaced. ठीक है, और जो हमारा फाइनल बचेगा यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इस क्लोरीन एटम की जगह के यू हैव टू अटैच द एन एटम, और जो बाकी का कंपाउंड है दैट विल बी सेम, एंड देयर विल बी दिस H आल्सो. ठीक है, एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी HCl. नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज सल्फोनामाइड. और सल्फोनामाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे अमाइड क्या होता है, अमाइड इज व्हेन यू हैव N एंड देन यू हैव CO ग्रुप अटैच्ड टू दिस N. ठीक है, तो ये हमारा अमाइड हो जाता है, CONH2 ग्रुप है ना. और फिर यहाँ से कोई भी दो कंपाउंड्स अटैच हो सकते हैं, दे कैन बी आइदर हाइड्रोजन और सम अदर अल्काइल ग्रुप. तो ये वाला जो ग्रुप होता है वी कॉल इट एज अमाइड. यहाँ पे हम इसे सल्फोनामाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखो सिर्फ कार्बन की जगह पे यू आर दिस CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके जगह पे यू आर हैविंग इस SO2 ग्रुप. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सल्फोनामाइड. नाउ द नेम ऑफ दिस रिएजेंट दिस प्रोडक्ट वुड बी, आप इसको सल्फोनामाइड इस ग्रुप को बोल देंगे, ये वाला जो पोर्शन है दिस विल बी सल्फोनामाइड. नाउ यू विल स्पेसिफाई कि विच अल्काइल ग्रुप्स आर बीइंग अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली. ठीक है, तो इधर पे इथाइल लगा हुआ है N के साथ में, सो दिस विल बी N इथाइल. ठीक है, और सल्फोनामाइड ग्रुप के साथ में क्या लगा हुआ है, बेंजीन. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पूरा ग्रुप है दैट इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. ठीक है, सो दिस विल बी बेंजीन सल्फोनामाइड. So the final name would be so this is the final name of this product. Also, you have to note the important point, which is
The hydrogen which is attached to this group, this nitrogen atom, I am talking about, I'll mark this hydrogen. जो ये वाला hydrogen है, this is acidic. Okay? Why? Because the nitrogen which is attached, the nitrogen which is there in the sulfonamide group, it is strongly acidic due to the presence of the strong electron withdrawing sulfonyl group. तो ये जो ओवरऑल SO2 ग्रुप होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है. दैट मीन्स इट विल ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम विल डिक्रीज. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन विल डिक्रीज, सो दैट इज व्हाई दिस NH बॉन्ड विल बी वीकर as compared to before, and so this hydrogen can easily escape. ठीक है, so that is the definition of acidity. ठीक है, what are acids? Acids are simply those compounds that can donate or that can release the proton very easily. ठीक है, तो इस केस में भी you can see कि इतना acidic nature है because of this strong electron withdrawing nature of this SO2 group. So that is why we can say that this complete compound, this whole compound is highly acidic in nature, and that is why it will be soluble in alkali. ठीक है, क्योंकि acids and bases they react to form salts. ठीक है, तो ये acid है, and if we are taking some base or an alkali, it will be soluble in that. ठीक है, so the final product is soluble in alkali. Now for the secondary amines, also there will be a similar reaction. The product will be similar, but the property will be different. I'll explain. Let me just write down the reaction. Suppose I am taking this secondary amine NH. ठीक है, obviously these two groups they can be different. उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि simply जो nitrogen जो hydrogen atom है that will be getting replaced. C2H5, C2H5 and then HCl. ठीक है. Now the product is similar. Why? क्योंकि वहाँ पे दो hydrogen थे, so one hydrogen was being left in the product. Now, because here in the reactant you only have one hydrogen which itself is getting replaced. ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है. दैट मीन्स कि ये जो लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द SO2 ग्रुप, अभी भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट वी डू नॉट हैव द हाइड्रोजन दैट कैन बी रिमूव्ड टू प्रूव द एसिडिक नेचर ऑफ दैट कंपाउंड. ठीक है, तो सो दैट इज व्हाई बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन टू बी डोनेटेड और रिलीज्ड, दिस compound is not acidic in nature. So we can say that this will be insoluble in the alkali. Okay, so I will write down the name first. The name of this product would be, because there are two ethyl groups which are attached to the nitrogen atom of the amine. So it will be जैसे हम similar amine में nomenclature करते हैं N, करके, वैसे यहाँ पे करेंगे N, diethyl benzene sulfonamide. ठीक है, so this is the name of this product. Now, I will write down the important thing here. Because of this acidic hydrogen, this compound is soluble in alkali for the case of primary amine. Okay. And I will write it down here that due to the absence of hydrogen atom, this compound is not acidic, and that is why it will be insoluble in alkali. Okay. So now we will move on to the third category, which is tertiary. And the same class of the reaction, that is the Hinsberg reagent. Okay. So for the tertiary amines, they do not react with this compound, with this reagent. That is the Hinsberg reagent से reaction नहीं होता है. So now you can see कि these all the three different kinds of amines, they are reacting differently with the Hinsberg reagent. ठीक है, and they are giving the different products. अब products obviously different होंगे, but I am talking about the property कि वो soluble है alkali में या फिर नहीं है. ठीक है, so these products are with different property. ठीक है, so that is why these difference in the properties of the products, it can be used as a test for the distinction or for the distinguishation of primary, secondary and tertiary amines. So we can easily distinguish primary, secondary and tertiary amines. And also if we want to separate the mixture of amines, ठीक है,
तो अगर सेपरेशन में हमें करना है और उस मिक्सचर में यू आर हैविंग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, तो वी कैन यूज दीज प्रॉपर्टीज। हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं एंड वी कैन जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वी कैन सिंपली ट्रीट इट विद द एल्कली। ठीक है, तो जो प्राइमरी अमीन वाला प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सोल्यूबल, सेकेंडरी अमीन वाला प्रोडक्ट विल बी insoluble in the alkali, and obviously tertiary amine will not react. So these are the difference in the properties. So this reaction is popular with the name of Hinsberg test. ठीक है, तो I will, you know, this can be important. This can be used to distinguish the primary, secondary, and tertiary amines. So what will be the results? If you talk about the summary, तो 1 degree amines में the product है is soluble in alkali because of the acidic hydrogen. In the case of 2 degree amines, the product is insoluble in alkali, and in 3 degree amines, no reaction. Okay, so this is important. Now we'll move on to the next reaction, which is the electrophilic substitution. Okay, so from the name only you can guess कि what is happening in this reaction. जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है, वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? सी, न्यूक्लियोफाइल इज Nu माइनस. ठीक है, तो इट हैज अ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो इट विल ट्राई टू सर्च फॉर द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज it will always try to search for the positive charge, and then it can substitute that, or it can attach to that. In the case of electrophile is E plus. ठीक है, so because it is positively charged, or you can say it has a less electron density, so it will try to search for the position which is having more electron density. ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. So what is happening here? In the last lecture I told you that aniline, there is a resonance thing that is happening. So this aniline is a resonance hybrid of 5 structures. I also drew those 5 structures जो resonance hybrids हैं. I drew all the 5 structures. So you can see in those structures that the जो हमारा negative charge है, that is being the electron is in conjugation in the ring. ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे मूव कर रही है. तो दैट मीन्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशंस इन द एनिलीन. मतलब हम रिंग की बात करें, द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशंस ऑफ द रिंग, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए टू अटैक अ पोजिशन. ठीक है, and that electron density is that electrophile is able to find in the ortho and the para position. Ortho मतलब the 1 and the 6 position, and the para is 4th position. ठीक है, so that is why if we are talking about the ring, the aromatic amines, these ortho and para positions, they are they have this high electron density, and because of the resonance. So I'll write out this. No, this is the reason of this reaction. ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑफ रिंग, मतलब टोटली 1 4 एंड 6, सॉरी 2 4 एंड 6 पोजिशन. ठीक है, तो आई राइट इट डाउन. ऑर्थो पोजिशन क्या होती है? 2 एंड, ठीक है, दिस इज द लोकेशन. नाउ द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशंस of these ring in the case of aromatic amines, they are the centers of high electron density. They have high electron density. और ऐसा हो क्यों रहा है? That is only because of resonance. So now because the electron density is high at these positions, electrophile will attack at only those positions. वो मेटा पोजिशन पे अटैक कभी नहीं करेगा. ठीक है, तो इस वजह से we simply say कि जो हमारा NH2 ग्रुप होता है, because of this electron releasing nature, और NH2 ग्रुप is ortho and para directing, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है टू अटैक in the ortho and para positions. So that is why this group is known as the ortho and para directing group, and it is a activating group.
एक्टिवेटिंग क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ग्रुप रिंग में कम कर रहा होता है, ठीक है। सपोज सम ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है। तो क्योंकि NH2 के पास में यू हैव दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करता है रिंग में। But if you are having some electron withdrawing group attached to the ring, that group will take away the electron density and it will deactivate the group. तो दिस इज द डिफरेंस। और उस केस में जो अटैक होता है वो मेटा पोजिशन पे होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल अगर कभी भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में अटैक करेगा तो वो हमेशा मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द अमीन्स ओनली। सो दिस अमीन्स इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड द एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज like we'll study about the bromination and the bromination, nitration and the sulfonation, ठीक है। तो ये तीन reactions we will study under the electrophilic substitution reaction. So the first one will be bromination. So bromination is simply the addition of bromine, or we are simply treating the compound with bromine, ठीक है। तो aniline reacts, aniline or any other aromatic amine, it reacts with the bromine water at the room temperature to give a white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या रहा है, ब्रोमीन वाटर इज अ रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रोमीन गैस के बारे में बात नहीं करें, दिस इज ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2,4,6। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने अभी बताया ऊपर कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक होगा वही हो रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, ठीक है। सो आई राइट डाउन द रिएक्शन, दिस इज टू रिप्रेजेंट ब्रोमीन वाटर, ठीक है। अगर गैस होता तो देयर वुड बी सम इंडिकेशन लाइक वी सिंपली राइट G फॉर द गैसियस कंपाउंड्स। ये तो हमारा एनिलीन है, दिस इज द टू पोजिशन, टू मतलब ऑर्थो, दिस इज द पैरा पोजिशन 4 एंड दिस इज 6 द अदर ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। तो ये 2,4,6 पोजिशन पे कंपाउंड बना है, द नेम आई हैव ऑलरेडी रिटन 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन विद द बाय प्रोडक्ट एज HBr, ठीक है। So, I mean, the reaction is easy. You simply have to see कि वो activating group है and it is ortho and para-directing. तो जो भी चीज हम add करवा रहे हैं, it will simply get added to the ring. Now, there is some problem with this reaction. Like you can say it is a disadvantage of this reaction. कि the main problem here is that with this electrophilic substitution reaction, जो aromatic amines we are using, like aniline and all, these are very highly reactive. So that is why the substitution is, you have seen that it is happening at all the position. 2, 4, 6 ही possible position है और उन तीनों position पे ही substitution हो रहा है, ठीक है। ट्राई substitution हो रहा है तीनों जगह पे। तो now suppose if we want to prepare the mono substituted aniline derivative, mono substituted I mean कि आप किसी एक सिंगल लोकेशन पे ही ब्रोमीन चाहिए, ठीक है। उन तीनों पोजीशन में किसी सिंगल पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए तो देन हाउ शुड वी कैरी आउट द रिएक्शन फॉर दैट डिजायरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ वेरी पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस NH2 ग्रुप, ठीक है। तो जब अगर हम एक्टिवेटिंग इफेक्ट NH2 ग्रुप का कम कर देते हैं, तो किसी तरीके से कम कर देते हैं, तो वी कैन सिंपली फाइंड द रिएक्शन कैन फॉर्म द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो वी विल सी कि हाउ कैन वी रिड्यूस दिस, ठीक है। so I mean I will like because we are now getting the multiple substituted product, right? And if we want to get to the mono substituted derivative, ठीक है। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, we'll simply to understand this concept better, we will first talk about why this is happening, ठीक है। And if we want the mono substituted product, then how it can be achieved and what's the reason
behind the behind this procedure. ठीक है, सो इस तरीके से पढ़ेंगे. So first of all, let's answer this question that why we are only getting the multiple substituted product. ठीक है, तो you can simply understand it because of highly activating nature, because of the highly activating nature of the NH2 group. The ring becomes highly activated और हमें multiple substitutions मिल जाते हैं. ठीक है. Now, if we want to go to the monosubstituted product, then how will we proceed? ठीक है, तो basically we need to we need to reduce, or we can say not exactly reduce. We can say that we can control the activating effect. We can simply control the activating effect uh, by protecting the NH2 group by acetylation. ठीक है, acetylation we also call it as acylation, जो हमने like when we were the third chemical reaction, the third category chemical reaction was acylation. ठीक है, तो उसमें COR group is being attached onto the जो भी हमारा अमीन है उसमें सिंपली अटैच हो जा रहा है. ठीक है, सो हियर यहाँ पे भी वही चीज हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. We will simply react, or we will simply treat the aniline with the anhydride. Suppose we take acetic anhydride, that's the simplest one. So we can take acetic anhydride और उससे reaction करवा देते हैं, तो हमारा final product would be amide. ठीक है, जो उस केस में भी था. तो similar reaction यहाँ पे भी हो रहा है, amide बनेगा, and this amide is said to have the lower activating effect. ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि why this is so. ठीक है, तो I am just writing it in the form of points. So basically, we need to control the activating effect of this NH2 group by protecting the NH2 group by acetylation. ठीक है, acetylation में we generally we use acetic anhydride. ठीक है, acetylation. ठीक है, तो इसमें finally if we want to get to the monosubstituted product, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले we take aniline, क्या करवाते हैं, उसका acetylation करवाते हैं. ठीक है, acetylation मतलब the reaction of you simply want to add the acetyl group. ठीक है, तो आप उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा देते हैं. देन एसिटाइलेशन के बाद वी विल डू द ब्रोमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, जो भी हमने पढ़ा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, वी विल डू ब्रोमिनेशन, एंड आफ्टर ब्रोमिनेशन वी विल डू दी हाइड्रोलिसिस. जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी विल फाइंड आउट कि वी हैव गॉट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है, तो आई विल फर्स्ट राइट डाउन दिस कंप्लीट रिएक्शन, जो आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स. ठीक है, ये अमीन है, पहले हम क्या करवाएंगे, एनिलीन है सॉरी, पहले वील डू दी एसिटाइलेशन. ठीक है, एसिटाइलेशन में क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे. तो एसिटिक एनहाइड्राइड इज CH3CO, then single O, and then again COCH3. So this is the formula of acetic anhydride, and this is generally done in terms of in the presence of a stronger base. ठीक है, ये और हम क्यों लेते हैं stronger base, ये भी मैंने उस टाइम पे when we were discussing acylation I explained you the reason. So pyridine is a stronger base as compared to amine. So now the final product would be amide. ठीक है, this is the final product, this is amide, and the name of this product is N-phenyl ethanamide, the IUPAC name, and it is also called. Okay, so this is the product after acetylation. Now what we'll do, the next step is bromination. So bromination के लिए we will take bromine water, and obviously this after acetylation you will also get the product, the side product, which will be the acetic acid CH3COOH. Now after bromination what will happen is कि यहाँ पे जो हमारा पूरा कंपाउंड है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ब्रोमिनेशन जो होता है वो रिंग में होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अमाइड. ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑन द नाइट्रोजन एटम, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो द अमाइड ग्रुप इज ऑल्सो सेड टू बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, तो आफ्टर ब्रोमिनेशन द प्रोडक्ट वुड बी दिस. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में either you can do it in the aqueous medium or you can take the acidic medium. So OH minus or H plus, this is for the medium.
तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, वापस से आपका जो अमाइड है दैट विल टर्न इनटू अमीन विद नो इफेक्ट ऑन द ब्रोमीन विच हैज बीन ऑलरेडी अटैच्ड। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, आप नॉर्मल मतलब इस केस में नहीं, आप किसी भी अमाइड को लो, ठीक है, वेदर कहीं से भी विच एवर काइंड ऑफ अमाइड इट इज, यू सिंपली हाइड्रोलाइज इट either in the acidic or the basic medium, and you will finally get to the amine part of that, the corresponding amine. ठीक है, so important things that you should know about this reaction is कि ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है पैरा पोजिशन, इन द हियर द ब्रोमीन इज अटैच्ड टू द पैरा पोजिशन, द फोर्थ पोजिशन, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ एनीबडी कैन दैट कैन गेट कंफ्यूज्ड कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट डजंट मीन कि द सब्स्टिट्यूशन इज ओनली हैपनिंग एट द पैरा पोजिशन। आई मीन देन द सब्स्टिट्यूशन कैन आल्सो हैपन एट द ऑर्थो पोजिशन, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे भी ज्यादा है, but we are getting para substituted product as a major product because of the steric hindrance. Steric hindrance is one of the major factors why we are getting the para product as a major product. ये compound जो amide group लगा हुआ है on this carbon atom, on the first carbon atom, that is creating, that is a very big compound, and because of the big size of this functional group, there is a lot of steric hindrance to bromine atom. ठीक है, तो इस steric hindrance की वजह से this is a major product, and obviously in some minor amount ortho products will also be there, but जो भी होगा वो मोनो सब्स्टिट्यूशन में ही होगा। ठीक है, so here the product is, this is said to be 4 bromoaniline। ठीक है, तो एक important चीज तो ये this was one of the most important things। Now another thing is reason, I have written down reason, like why is this happening, हम simply acetylation से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑन द नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड, इट इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम। क्योंकि देखो नॉर्मल अमीन में यू आर नॉट हैविंग दिस सीओ ग्रुप, दिस कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। ठीक है, लेकिन अमाइड में यू आर हैविंग अदर कार्बोनिल ग्रुप, दिस सीओ ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। तो व्हाट इज हैपनिंग इज ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑन द नाइट्रोजन एटम, दैट इज इंटरैक्टिंग विद द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस इंटरैक्शन इज हैपनिंग। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होगा, सपोज ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, आई एम ओनली शोइंग यू द अमाइड पोर्शन। ठीक है, वो पूरा जो हमारा रिंग है वो तो रहेगा ही, बट ये जनरल जनरल एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड ऑक्सीजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नाइट्रोजन हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा, इट विल गो टू दिस बॉन्ड, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गो ओवर हियर। ठीक है, नाउ what will happen is the hybrid would be like this, because electron density chala gaya hai, so this is positive, this will be a double bond, this will be a single bond, the negative charge over here, this is CH3. तो reason is resonance। ठीक है, इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। So in this resonance thing happening in the case of amide, the lone pair on the nitrogen atom, it is basically participating in the resonance, and so it is not actually available for conjugation in the ring। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टिंग नेचर होता है, एक्टिवेटिंग नेचर होता है ग्रुप का, ये होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग। ठीक है, वो रिंग में जाता है तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाता है, बट जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है उस कॉन्जुगेशन के लिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टेकिंग पार्ट इन अनदर रेजोनेंस। ठीक है, तो इस वजह से द you can say that this activating nature of amine has been reduced in the case of amide। ठीक है, so basically here I can summarize it, the activating nature, the activating effect of amide group is less than
दैट ऑफ अमीन ग्रुप। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एसिटाइलेशन करवा रहे हैं कि अमाइड ग्रुप बने और उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाए, और जिसकी वजह से this mono substitution can be possible. So this was all about the bromination thing. Similar things, the similar concepts are also there for nitration and sulfonation. Uh, so we will, continue with the nitration and sulfonation in the next lecture. This was all for today. Thank you.